आज क्लास रे हम डिस्कस करबे कोन EC2 माने इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड बा इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। तो आमे जितबेले कि जे कोनसे क्लाउड सर्विसेज विषय आमे जब डिस्कशन करथले जब बहुत सारा क्लाउड सर्विसेज अछि AWS रे राइट मोर देन 400 सर्विसेज मोर देन 365 और अराउंड 400 सर्विसेज। So EC2 is one of the services of AWS. So EC2 द्वारा हमें कौन करबे ना गोटे वर्चुअल मशीन क्रिएट कर तो आमे गोटे कंप्यूटिंग वर्ल्ड को जीवा कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विषय डिस्कशन करबा तो ता भीतर हमर रहइबो कोन कंप्यूटिंग गोटे जे कोन धर गोटे लैपटॉप नेले कि गोटे डेस्कटॉप नेले ता भीतर हमर हार्डवेयर रहइबो राइट हार्डवेयर रहइबो सॉफ्टवेयर रहइबो राइट बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशंस रहइबो तो आमे गोटे मशीन्स गोटे भीतर नबा आमे फिजिकल मशीन्स भीतर कथा होतले बट वर्चुअल मशीन्स नबा तो AWS जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करछि तो गोटे सर्विस जो हमें वर्चुअल मशीन्स केमती क्रिएट करबा से वर्चुअल मशीन्स थ्रू EC2 इंस्टेंसेस। तो Amazon वेब सर्विसेज जो सर्विस टा प्रोवाइड करछि दैट्स कॉल्ड EC2 इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट थ्रू इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटर हमें कोन करबा ना गोटे वर्चुअल मशीन क्रिएट करबा राइट whether it is Linux machine or Windows machines इथरे गोटे मशीन क्रिएट करबा आ ताकू Windows AWS हिसाब रे ताकू को होछि कि EC2 इंस्टेंस माने गोटे इंस्टेंस जोटा कि हमें वर्चुअल मशीन्स अलगा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कहउछनी तो AWS रे एटा को हमें कहउछो इंस्टेंस गोटे राइट गोटे AWS EC2 instance. So what is this EC2 instance? Let's get more details about that. What is EC2? EC2 is Amazon Elastic Cloud Compute is a web service, right? Everything whatever we are giving is actually one of the web service, okay, that provides secure resizable compute capacity in the cloud. So secure and resizable. So secure, it is more secure than other like AWS claims like they provide 99% availability with high security, right? So provide secure and resizable compute capacity. Resizable is based on your requirement. You can resize it. You can increase, you can decrease, right? You can expand it, you can squeeze it based on your requirement. So it says the provide secure and resizable compute capacity. So whenever they provide the EC2 instances or servers, तांकर पाखरे कोन छै वेरियस ऑप्शंस अछि तमे को पर्टिकुलर ऑप्शन तमो हिसाब रे रिक्वायरमेंट हिसाब रे तमे चूज करिवो तार रिक्वायरमेंट अछि तो गोटा अछि ऑन डिमांड मींस allows you to pay fixed rate by the hours by the second with no commitment. अब इसे हमें elaboratively discuss करिवा next slide रे. Next अछि reserved means provides you with a capacity reservations and offer a significant discount on the hourly charge for an instance 1 year 3 years terms. Suppose reserved capacity तमे जे reserved कोटे कोनसी particular दिनसो जे कोनसी भी दिनसो not only in the cloud services or not only in the EC2 तो तमे जे कोनसी दिनसो भी गोटे रिजर्व करबा को जाउ छ तमे से obviously जे कोनसी रिजर्व दिनसो तमको प्राइस कम आसीबो राइट बिकॉज़ तमे गोटे कमिटमेंट करछो जे मते एतिक वर्ष रिजर्व दरकार जेंति कि हमें गोटे हाउस नेला बोले कि रेंट आइदर रेंट नबो किमा लीज नबो रेंट नेला हमें कोन शटर पीरियड पॉइंट रेंट नौचे जेंति कि 1 मंथ 2 मंथ्स रो रेंट नौचे एवरी मंथ वी आर पेइंग इट बट द लीज नौचे हम गोटे लॉन्गर टर्म पई नौचे तो 1 ईयर 2 इयर्स नेले त माने टेनेंट जे ओनर रहला से कोन कोन से असियोर रहला जे मोर 1 ईयर पई पर्टिकुलर रूम बुक हे जाई तो से बडी हम 1 ईयर की 3 इयर्स रो टर्म रो गोटे पर्टिकुलर सर्विस की machine हमें रिजर्व कले सर्वर रिजर्व कले तमने AWS is assured that we have booked for reserved for 1 year then we have to pay for 1 year price 1 year whatever price will come we have to pay for that or that price जेते calculate करिवो से प्राइस टा हमहु दउ पड़िवो तो नेक्स्ट अछि spot enables you to bid whatever price you want for the instance capacity तो इंस्टेंस कैपेसिटी पे जो प्राइस माने तुमको बीट करिया पड़ियो माने गोटे प्राइस एंती नीलाम हुए हमरो नीलामिंग बेल जेते कोन तुमको जेति प्राइस दिया तो सही प्राइस से तुम बीट करिवो तुम दी सुटेबल ले ताको तुम आनिवो राइट नेक्स्ट आसुची डेडिकेटेड होस्ट physical EC2 server dedicated for your use dedicated host can help you reduce by allowing to user existing server bound software license तुम जदी कोनसी गोटे प्राइवेट सॉफ्टवेयर प्राइवेट सर्वर यूज करिवार अछि तो सेते तमे कोन करबो ना गोटे डेडिकेटेड होस्ट नबो डेडिकेटेड इज ओनली फॉर यू
माने ता सर तमे मल्टी टेनेंसी नहीं माने का को तमे अलग शेयर करबे आउ कि अननेसेसरी बाहर लोक के एक्सेस करि परिबे तो ओनली फॉर डेडिकेटेडली ओनली फॉर योर यूज तमर निजर स्पेसिफिक यूज पई तमे नबो प्राइवेटली एक्सेस करिवो तो आमे मोर एलाबोरेटली आमे यदि भाबिबा ऑन डिमांड जोटा मु कहउतली ऑन डिमांड हला परफेक्ट फॉर यूजर्स दैट वांट द लो कॉस्ट एंड flexibility of Amazon EC2 without any front end payment or long term commitment. Okay, perfect for users that want the low cost and flexibility of EC2 without any front end payment and long term commitment. तो front end payment means हमको immediately किसी payment करिवार नहीं ଯେମିତି କି ଆମେ ଆମର କୌଣସି ନେଟୱାର୍କ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ଆଇଦର ପ୍ରିପେଡ୍ ଅର୍ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ରାଇଟ୍ ପ୍ରିପେଡ୍ ରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ଫର୍ଷ୍ଟ पेमेंट करिबा तापर यूज करिबा प्रीपेड पोस्टपेड रे कोन होची हम यूज करि सारिबा तापर पेमेंट करिबा तो एटी कोन होची हम सर्वर जो होची काइंड ऑफ प्रीपेड मींस यू आर नॉट सॉरी काइंड ऑफ पोस्टपेड यू आर नॉट गोइंग टू pay it immediately once you use it after that you have to pay it right so applications with short term spiky and unpredictable workloads short term means हमें जो short term रो यूज करिया पे चाहो गोटे तमे गोटे गोटे प्रोजेक्ट आसे तमे डेवलपमेंट सर्वर गोटे नबा चाहू तो किछि मास पय तमे डेवलपमेंट सर्वर तमे डेवलपमेंट 2 to 3 months रे कंप्लीट हे जो तो जानिछो जे 3 to months रे कंप्लीट हे जो देन गोटे सर्वर नेल किछि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट हिसाब रे तमे डेवलपमेंट कलो आरएनडी कलो तापर दरकार नै सर्वर छाड़ दियो जति की यूज हला सेति कर यूसेज रे पैसा दबो स्पाइकी मींस केतबे इंक्रीज होतो केतबे माने इमीडिएटली इंक्रीज हे जो स्पाइक करी माने तमरो धरो गोटे यूज करछो सॉफ्टवेयर तमे प्रोडक्ट यूज करछो गोटे कस्टमर पई से कस्टमर दुईटा कस्टमर पई इमीडिएटली से प्रोडक्ट मार्केट रे डिमांड बढ़ी गला तो इमीडिएटली कस्टमर बढ़ले तो स्पाइक हला तो वर्कलोड बढ़ला तो से हिसाब रे सर्वर भी बढ़िया पड़िबो तो इमीडिएट स्पाइक पई तमे ऑन डिमांड सर्वर नबो अनप्रेडिक्टेबल वर्कलोड्स जोटा कि अनप्रेडिक्टेबल प्रेडिक्ट करी ना प्रेडिक्शंस नाही इमीडिएटली वर्कलोड बढ़ी गला अधिका कस्टमर जान तमे सेही टाइम रे ऑन डिमांड पई चूज करिवो applications being developed and tested on Amazon first time तमे गोटे डेवलपमेंट सर्वर नौचो कि टेस्टिंग सर्वर नौचो किछि दिन टेस्ट करिवा पई देन यू कैन गो विथ द ऑन डिमांड रिजर्व्ड इंस्टेंस इमति कहली किछि मास पई किछि वर्ष पई रिजर्व करिवो तमे जानि देलो जे मोर एप्लीकेशंस फॉर नेक्स्ट 3 years or 4 years is going to be stable static that is not going to change anything means tomorrow predictions like steady state like तमरो प्रेडिक्शंस अछि जे मु एति कि हमर 4 इयर्स पूरा कांस्टेंटली तमे गोटे एग्रीमेंट साइन कर दैछो गोटे कस्टमर सहित जे 4 इयर्स आई नीड दैट सर्विस तो तमे काम करबो ना कांस्टेंटली 4 इयर्स पय गोटे रिजर्व कर देलो ओके applications that require reserved capacity also can make upfront payment to reduce their total computing cost तमे देखिथिबो एमति नॉर्मली राइट जेकोनसी दिन सब गोटे तमे किनिबा को जाओ तमे जदी पार्ट पेमेंट करूचो राइट पार्ट पेमेंट करूचो बा इनिशियल किछि पेमेंट करूचो कि लास्ट पेमेंट करूचो तार कोन होता प्राइस ता बढ़ी जाउची राइट तमे तो इमीडिएटली गोटे पेमेंट जरो 1 ईयर कि 2 इयर्स फाइनल इमीडिएटली पेमेंट कर देलो obviously से तुमको डिस्काउंट दबो राइट द सेम थिंग अछि यूजर्स कैन मेक अपफ्रंट पेमेंट टू रिड्यूस देयर टोटल कंप्यूटिंग कॉस्ट इवन फर्दर तमे तो इमीडिएटली पेमेंट करूचो तो किछि डिस्काउंट तुमको से माने देबे तो रिड्यूसिंग कॉस्ट फर्दर तो इफ यू गो विथ रिजर्व इंस्टेंसेस ओके नेक्स्ट कम द स्पॉट इंस्टेंसेस जेमति कहली कि तुम इमीडिएटली रिक्वायरमेंट जे कोन से बिड प्राइस रछि से प्राइस से जति कि नीलाम होछि सेही प्राइस से तमे आनिबो स्पॉट रेट केते अछि बीट करिवो तमे एति ग्रेट मते दरकार तो सही हिसाब रा तो को पॉइंट नबो हमें एप्लीकेशंस दैट हैव फ्लेक्सिबल स्टार्ट एंड एंड टाइम जो एप्लीकेशन द फ्लेक्सिबल एंड आउट स्टार्ट टाइम अछि तमे सही स्पॉट इंस्टेंसेस सही टाइम रे चूज करिवो एप्लीकेशंस दैट आर ओनली फिजिबल फॉर द वेरी लो कंप्यूट प्राइस देन यू शुड गो विथ spot instances you just with an urgent need for large amount of additional computing capacity then you should go with spot instances okay then dedicated host useful for regulatory requirements that may not support multi-tenant virtualization multi-tenant means multiple माने सर तमे गोटे जे कोनसी रेंट नै कि गोटे जगह रहउछो माने रेंट रे गोटे बिल्डिंग बनाइछ राइट गोटे बिल्डिंग जरा सपोज गोटे बिल्डिंग रे 5टा हाउस अछि 5टा रूम अछि तो 5 से बिल्डिंग ता पर्टिकुलर गोटे ओनर से ओनर चाहछि से रेंट दवा पे
तो मल्टीपल टेनांट माने जे की भड़ा रे रहिबो जे भड़ा माने रेंट नवा पय आसो तो रेंट जो माने रहिबो से माने टेनांट रे रहिबो टेनांट तक को जे टेनांट तो मल्टीपल टेनांट से बिल्डिंग को पांचटा हाउस अछि माने पांच जण पीपल 5 people कैन एक्सेस दैट हाउस बिकॉज़ दे आर गोइंग टू स्टे एज टेनांट हिसाब रहिबे तो बट तमे डेडिकेटेड हाउस नहीं गलो तम पर्टिकुलर से बिल्डिंग टा केवल तमरो पर्पस पे तमे आ काउ दबो तो it's not allowed for others to use it, right? Dedicated for your own purpose only. तो similarly तमे तो सर्वर नउछ तमे गोटे सर्वर किछि पर्सन तमे डेडिकेटली तमे परचेस कर देलो तो ताको आउ कोनसी मल्टीपल टेनेंट माने अलगा टेनेंट के यूज करि पाइबे पब्लिकली के यूज करि पाइबे राइट तो डेडिकेटेड होस्ट can be purchased on demand hourly basis can be purchased as a reservation up to 70% off on demand price देखो तमे दी डेडिकेटेड होस्ट नउछ जदि तमे रिजर्व करूछ then up to 70% off भी तमे पाई परिबो up to 70% off बोल मते पाई परिबो ओके बुझिलो टाइप ऑफ कौन सब ऑप्शंस अछि ए ऑप्शन सब मन रखितो एही तुमको दरकार पड़ियो जतल तमे सर्वर गोटे क्रिएट करछो कि मशीन गोटे क्रिएट करछो वर्चुअल मशीन राइट the spot instance वाला डेडिकेटेड होस्ट ना इंस्टेंस टाइप तो आमे जतल गोटे मशीन क्रिएट करबा को जाउछे नॉर्मली आमे जतले किछि लैपटॉप हो कि कंप्यूटर हो गोटे मार्केट को गले किनबा पे इलेक्ट्रॉनिक शॉप को गले तमे कोन देखुछे तुम फर्स्ट तार कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कोन राइट लैपटॉप लाइक प्रोसेसर केते तार रैम केते मेमोरी केते राइट स्टोरेज केते आ कोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स अछि ए सब देखिबा हमें फर्स्ट हमें देखिबा कोन केते कोन प्रोसेसर अछि रैम केते अछि मेमोरी जीपी स्टोरेज केते अछि राइट ए सब देखिबा तो इंस्टेंस टाइप तो जोटा कि हमें छिबा को टाइप रो लैपटॉप गोटे किनिबा हमें केमति किनिबा हमर रिक्वायरमेंट हिसाब राइट हमर रिक्वायरमेंट कोन मु गेमिंग पाई नउची कि ओनली फॉर डाटा एंट्री पाई नउची कि ओनली फॉर ब्राउजिंग नउची कि किछि एप्लीकेशन डेवलपमेंट करछि कि किछि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि नॉर्मल वेब डेवलपमेंट based on the requirement so we have to choose the machine right similarly तमे दी AWS also तमे दी किछि भी पर्टिकुलर मशीन नवा को जाउछ कि इंस्टेंस नवा को जाउछ EC2 इंस्टेंस नवा को जाउछ तो को टाइप रो इंस्टेंस हमको दरकार केते मेमोरी दरकार केते स्टोरेज दरकार तो ए टाइप रो तमे चूज करिवो तो ताकू को जे कोडे इंस्टेंस टाइप तो एठी कोन छै ने वेराइटी ऑफ इंस्टेंस टाइप्स अछि कोन छै AWS EC2 provides a wide selection of instance type optimized to fit different use cases. तमरो different use cases में different instance type तमे use करि परिबो. Similarly, instance types comprise varying combinations of CPU, memory, storage, and networking capacity, give you flexibility to choose appropriate mix of resources. The com provide करछि CPU like the processing, right? Processor, memory, storage, all these things, network capacity, everything it provides. Each instance types include one or more instance sizes. So generally variety of instances it provides. So each instance has different type of configurations, right? तमे सही हिसाब रे तमरो हार्डवेयर कैपेसिटी कोन दरकार मशीन कैपेसिटी कोन दरकार सही हिसाब रे तमे इंस्टेंस टाइप चूज करिवो राइट तो हम जदि इंस्टेंस टाइप को हमें जिबा various instance types देखो for general purpose compute optimized तो सब बेले एक्चुअली क्लास हम जो कहि छी कि जे कोनसी टूल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तमे सिखो सब बेले प्रेफर करबो तांकर documentations always you should follow their documentations काहे कि ना से माने जेहेतु से माने they are the developer से माने डेवलप करछन से माने इन्वेंट करछन राइट तो से माने जहां भी डिटेल्स बनै छन सब जाक डॉक्यूमेंटेशन से रखाइ छ तो तमे जदी मास्टर होबा को चाहछो देन यू हैव टू फॉलो देयर डॉक्यूमेंटेशंस right first you get the ideas how to get what is that and why you need it right then go follow their documentation to get mastery on that तमर रिक्वायरमेंट तुमको दबो कि ना तमर बिजनेस एनालिस्ट जो मानते बीए थी बिजनेस एनालिस्ट बिजनेस डेवलपमेंट पीपल से माने कोन करबे कस्टमर टू आनिबे तो कस्टमर भी क्लाइंट टू आनिबे रिक्वायरमेंट क्लाइंट आने से माने बसी के एनालाइज करबे एनालिसिस करबे तो कोन दरकार एक्चुअली कस्टमर को कोन दरकार तार रिक्वायरमेंट कोन ताको आनी के रिक्वायरमेंट एनालिसिस करबे रिक्वायरमेंट एनालिसिस सइला परे से माने आसीबे सिस्टम डिजाइन पाखु डिजाइन करियो मु जो फ्लोटा बतौतली एसडीएलसी बतौतली राइट सिस्टम रिक्वायरमेंट सिस्टम एनालिसिस पर सिस्टम डिजाइन आसो सिस्टम डिजाइन फेज रे तुमको डिसाइड करिवो डिसाइड करिया पड़िबो कस्टमर रे रिक्वायरमेंट कोन
तो मते को हिसाब रो सॉफ्टवेयर गोटे दरकार धर कि सॉरी मशीन वर्चुअल मशीन दरकार तो कस्टमर रिक्वायरमेंट हाई एंड गोटे डाटाबेस रखियार अछि राइट गोटे हाई एंड डाटाबेस बहुत इनपुट आउटपुट दरकार बहुत आईएफ्स दरकार तो माने कस्टमर सब बळे क्लाइंट फेस करथबो राइट क्लाइंट एक्सेस करथबे तो ताको ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटाबेस स्टोरेज गोटे सिस्टम दरकार आ प्रोसेसिंग हाई प्रोसेसिंग यूनिट दरकार तो सही हिसाब रे हमें आसीबा सही हिसाब रे हमें चूज करबा को टाइप रो मशीन हमको दरकार राइट तो एठी वेराइटीज ऑफ मशीन्स दोच जेम कि जनरल पर्पस कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड जनरल पर्पस रे कैटेगरी सब आसुची तो ये सब मने रखिबा एक्चुअली जदी भी एक्चुअली एक्जाक्टली से माने मोर देन 300 समथिंग प्रोवाइड करछन कोन इंस्टेंसेस भी प्रोवाइड करछ इंस्टेंस टाइप्स प्रोवाइड करछंती मोर देन 250 समथिंग सो तमे सब तो मने रखि परिबन तो कोन करिवो यू हैव टू फॉलो द डॉक्यूमेंटेशंस तो तमर कोन दरकार अछि सही हिसाब रे तमे आसियो को पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट सपोज ये सब कैटेगरी देछि राइट जनरल पर्पस कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड accelerated computing storage optimized HPC optimized right ये सब विषय देछि तो धर तुमको गोटे कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड दरकार है हाई पावर रो दरकार है राइट तो तमे कोन करबो ना कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड दिबो तो कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड ए टाइप रो दरकार सो कोन एठी कहै छै compute optimized instances are ideal for compute bound applications that benefit from high performance processor instances belong to this category are well suited for batch processing workloads and media transcoding kind of so तमरो जो टाइप रो रिक्वायरमेंट आसियो सेही टाइप रो आसि तमे सर्च करबो ओके हमें दी कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड को जिबा तो पर्टिकुलरली जदी C7G कैटेगरी की हम सिलेक्ट करबा देखो केतरा अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 तो टोटल 14 टाइप्स रो 14 कैटेगरी रो कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड रो इंस्टेंस टाइप्स अछि राइट 14 कैटेगरी इंस्टेंस टाइप्स तो ईच इंस्टेंस टाइप हमें C7G चूज करिवे तो आर फीचर्स कोन C7G कैटेगरी रो आर फीचर्स कोन तमे जेमति लैपटॉप किने जो गोटे कैटेगरी लैपटॉप थिवो ए कैटेगरी लैपटॉप कोन कोन फीचर अछि गोटे ब्रांड सिलेक्ट कलो HP रो सिलेक्ट कलो HP रो वेराइटी कैटेगरी थिवो तो ए कैटेगरी कोन फीचर अछि सेही फीचर्स को तमे चूज करिवो समझा डेल गलो या फिर लेनोवो गलो जे कोन सी लैपटॉप तमे किने तो तार पर्टिकुलर कैटेगरी हिसाब रे फीचर चूज करिवो सिमिलरली तमे एठी फीचर चूज करिवो कोन हार्डवेयर तुमको दरकार यदि मु C7G कैटेगरी की गली तो तार ए सब इंस्टेंस साइजेस आसुची वेराइटीज देखो केते इंस्टेंस साइज रो ए सब टाइप रो इंस्टेंस साइजेस आसुची तो तुमको चूज करिवो तुमको CPU केतरा दरकार रिक्वायरमेंट हिसाब तो CPU केतरा दरकार तो मते दरकार सपोज 8टा CPU देन 8 CPU मते दरकार तो you have to choose suppose C7G large 8 CPU मते मेमोरी दरकार 16 GB रो तो तमे एटा चूज करिवो तो जेते बडे चूज करिवो सेते बडे तमे प्राइस ऊपर भी ध्यान देबो पड़ियो केते कॉस्ट कोन राइट यदि प्राइस तमे न देखिबो तो सही हिसाब रे तुमको अधिका प्राइस भी आसी जो तो तमरो रिक्वायरमेंट हिसाब रे तम प्राइस कैलकुलेशंस इज मस्ट कॉस्ट कैलकुलेशन इज मस्ट सो गोटे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जे कोन गोटे क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट तो सब बेले डिसाइड माने सब बेले केयरफुली देखिबो त पड़िबो जे को टाइप रो सर्विस नेबी आ को क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यूज करबी आ कोन कोन सर्विस यूज करले मते कॉस्ट कम आसे त कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एमते हमें कॉस्ट ऑप्टिमाइज करबा त हम रिक्वायरमेंट हिसाब रे हम कंपनी के हम बेनिफिट दे करबो राइट तो सही हिसाब रे हम चूज करबा हम रिक्वायरमेंट हिसाब नाउ जदी मेमोरी ऑप्टिमाइज तमे जाउछो तले मेमोरी ऑप्टिमाइज को जीवो धर तुमको कोनसी हाई परफॉर्मेंस मेमोरी दरकार त ए सब कैटेगरी भीतर गोटे चूज करिवो राइट मेमोरी ऑप्टिमाइज देखो तो 128 देखो ये सब मेमोरी कैटेगरी रो केते आसुची 1536 गीगाबाइट 192 माने सही हिसाब रे प्राइस केते थिवो पाइप छ त प्राइस कैलकुलेशन तुम जदी करिवो राइट हम देखे दो कि प्राइस कैलकुलेट करिवो आर पर्टिकुलर तो पर आवरली बेसिस से माने कोन चार्ज करंती केमती चार्ज करंती आवरली बेसिस दे चार्ज ओके व्हाट दे डू दे चार्जेस आवरली बेसिस every hour hourly basis they charge okay then hourly basis they charge means every hour suppose तमे गोटे सर्वर यूज कलो गोटे सर्वर दरो केमिति पुनी एग्जैक्टली देखो आइदर तमे डेवलपमेंट पाई यूज करछो ना टेस्टिंग पाई ना प्रोडक्शंस पाई कोन पाई यूज करछो तो तमे यदि प्रोडक्शंस पाई यूज करूछो राइट तो प्रोडक्शन कोन को 24/7 दरकार कारण एप्लीकेशन सब भी ऑलवेज अवेलेबल 24/7
so that customer can access your application. But તમે જે development ପାଇଁ use କରୁଛ તમારી specific suppose Asia Pacific region ରେ people ତମର Asia Pacific region ରେ people ତମର developer ଅଛନ୍ତି. Suppose developer are in India. Developer are in India. Right? So what they'll do? Suppose Indian time ତମେ ତମର office timing development time 9 to 6 suppose. ତ તમે କଣ କରିବ ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସର୍ଭରଟା ତମେ ଅନନେସେସରି 24/7 ରନ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଜଷ୍ଟ 9 ରୁ 9 to 6 or 7 1 hour buffer time ରେ ତମେ ସେତିକି ପିରିୟଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟ୍ କରିଦବ ଟାଇମ ଯେ ମୋର ସର୍ଭର ଏତିକି ଟାଇମ ହିଁ ରନ୍ ହବ ତା ମାନେ କଣ ହେଲା 9 to 6 ଯୋଉ 9 hours କି 10 hours କେବଳ ତମେ 10 hours ର ହଉ 9 to 6 ହଉ या फिर 7 ହଉ 10 hours ସପୋଜ ତମେ ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତ you have to pay money or pay for 10 hours only. The rest of the amount you not have to pay because this is development server. After that it will not be in use. તમે यूज करू न तो काहे unnecessary pay करिवो तो તમે कोन करिवो सेव कर તમે फर्स्ट रिक्वायरमेंट बुझिवो तो पर्पस कोन बुझिवो तापर हमें सिलेक्ट करिवो राइट मेन थिंग है प्राइस कैलकुलेशंस राइट तो फर्स्ट हमें बजेट देखि कि हमें लैपटॉप आनिबा ना जो हिसाब रे जाई कि उठे दवा लैपटॉप आनी बनी से हिसाब रे हमें ओडे मशीन आनिया बोले से हिसाब रे हमको तार प्राइस ता चेक करिवो राइट तो आम जो EC2 इंस्टांसेस जो आम देखियो बोले देख ये कौन कहूँ 664 राइट 664 इंस्टांस टाइप्स अवेलेबल माने तमे 664 टाइप रो मशीन करी किनी नहीं पारिबो बनै पारिबो 664 टाइप ऑफ मशीन्स यू कैन क्रिएट इन AWS राइट तर प्राइस विषय आम जो कथा हबा देखो हमें डिफरेंट टाइप रो इंस्टेंस रहिला फर्स्ट हमें T2 माइक्रो रु स्टार्ट कर दे T2 माइक्रो आ भीतर नानो विषय हम डिस्कशन करबा बहुत सारा T2 स्मॉल T2 कैटेगरी रो सी सब कैटेगरी रे इट रोज राइट इंस्टेंस टाइप तो वर्तमान प्राइस कैलकुलेट देखो आर ऑन डिमांड विंडोज प्राइस लाइनक्स प्राइस तो एटी ये कोन कहछि ना तुमको विंडोज प्राइस दोछि विंडोज रो प्राइस दोछि मशीन लाइनक्स मशीन भी दोछि तो विंडोज मशीन लाइनक्स मशीन का डिफरेंट प्राइस ता रोची राइट तो वर्तमान हमें चूज करबा देखो ऑन डिमांड विंडोज प्राइस कोन कहछि 0.02 USD पर आवर गोटे घंटा को 0.02 USD US डॉलर राइट सेमती लाइनक्स प्राइस कोन रोची 0.02 USD आल्सो तो हमें जदी टिके हायर रेंज रो नबा 32 रो धर सपोज लेला आ 60 मेमोरी C3 8x लार्ज राइट जदी नबा ताम देखो केते रहउची विंडोज प्राइस ता रहउची 3.83813 USD पर आवर 2.4 आवर रो जदी हमें आकु कन्वर्ट करबा आवर इंडियन रुपीस रे राइट लेट्स कैलकुलेट ऑन T2 माइक्रो बिकॉज़ वी आर गोइंग टू वर्क मोस्टली ऑन दिस हमें जदी एटा को छाड़ दियो डिलीट करो फर्स्ट 0.02 USD डॉलर राइट तो हमें जदी US डॉलर कन्वर्शन करिबा राइट 0.02 USD टू INR तो हमर कोन होची ना गोटे टंका 68 पैसा 1 rupees 68 पैसा वी आर गोइंग टू पे फॉर 1 आवर कोटा की T2 माइक्रो सब टू लोएस्ट हमें नउछ हैला T2 माइक्रो हमको पे करिया पड़िबो 1.68 rupees पर आवर तो हमें आपको कन्वर्ट कर दबा आवर को 1.68 को पर आवर सपोज तमे 24 आवर चलेबा चाहू राइट लेट्स कैलकुलेट गेट द कैलकुलेटर तो 1.68 into 24 तो पर डे हमको केते 40 रुपीस स्पेंड करिया पड़िबो पर डे 40 रुपीस राइट तो मंथली सपोज 30 days राइट into 30 तो मासु को हमको ऑलमोस्ट अराउंड 1210 रुपीस आसी जीवो अराउंड 1210 पर मंथ तमे 1 मंथ जदी 24 आवर्स प्रैक्टिस करूछे तो हमको आसी जीवो एतिकी तो तमे 24 आवर प्रैक्टिस न करी 12 आवर प्रैक्टिस करछो और 12 आवर ऑफ कर दोछो राइट तो तुमको कोन आसीबो डिवाइड बाय 2 कर दियो तुमको ऑलमोस्ट अराउंड 605 रुपीस आसी जीवो कोन पर मंथ तमे दी
हाफ डेज प्रैक्टिस कर हाफ डे स्विच ऑफ कर रखिलो राइट चलो हमरो लेट्स गो विथ मंथली तो ईयरली हमें जदी कैलकुलेट करबा इनटू 12 months सपोज मंथ ले 14,505 तो हमें T2 माइक्रो सब लोएस्ट जो टाइम होचे त हमें जे यूज करबे एते बट आ गोटे कथा हला हमर T2 माइक्रोटा ही सबुटु माने गोटी ही इंस्टेंस टाइप जोटा कि से फ्री दोछ आ बाकी चार्जेबल मु तुमको वर्तमान शो करथि केमिति तमे प्राइस कैलकुलेट करि करि केमिति कोन प्राइस टा शो करिवो देखिवो राइट तुमको जदी गोटे रिक्वायरमेंट अछि हाईली कंप्यूटिंग पावर रिक्वायरमेंट अछि जेमिति कि हमें नवा सपोज C524 एक्स्ट्रा लार्ज जदी हमें एटा को नवा तो आर प्राइस कैलकुलेट हमको करिया गेले आर देखो 4.7 USD लाइनक्स प्राइस और विंडोज प्राइस हला 9.12 USD डॉलर सो 9.12 USD डॉलर मींस तुम यदि कैलकुलेट करिवो 9.12 765 per hour right 765 you have to pay per hour तो सही हिसाब रे हम जदी कैलकुलेट कर दबा 765.68 into 24 18,376 per day single day we have to pay 18,000 तो सही हिसाब रे तुमको कैलकुलेट करिया पड़े केते को टाइप रो मशीन्स तुमको दरकार तार रिक्वायरमेंट कोन आउ केते साइज रे तमे अफोर्ड करि पाइबो केते पैसा तमे अफोर्ड करि पाइबो तो सही टाइप रो तुम मशीन्स मिलियो राइट चलो तो हमें सब इंस्टेंस टाइप विषय कंप्लीट जानि गले नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी how we can create one linux machines first okay तमे तले मशीन क्रिएट करबा को जाउछो तो मशीन क्रिएशंस बेले you have to be always very careful which region you are choosing so वर्तमान तुम देखो ना को रीजन रे अछि सिंगापुर रीजन और सिलेक्ट हे जाई सिंगापुर रीजन बट मु सिंगापुर रीजन जदि सर्वर क्रिएट करिवि कंपैरेटिवली मुंबई रीजन इट विल बी कॉस्टलियर राइट it will be high cost it will be costlier तो मते कौन दरकार तो मते कम रेंज रो मत फर्स्ट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू हमको रीजन जो चूज करिवा रीजन केमती चूज करिवा रीजन इज द isolated geographical locations having the availability zone with distinct data centers right तो region भीतर रोची कोन availability zone one region can have multiple availability zones right one or more availability zone how would availability zone भीतर रोची कोन हमर data center can be one or multiple data centers तो वर्तमान हम तो चूज करबे region right so how will choose that region basically मतलब देखिया को गले तो suppose we are sitting here in Odisha suppose in Bhubaneswar we are in Odisha right मते गोटे मशीन दरकार राइट तो मशीन दरकार माने मुझे तो गोटे वर्चुअल मशीन नॉट फिजिकल मशीन व्हाटएवर आई एम टॉकिंग नाउ इज कंप्लीटली वर्चुअल तो मते गोटे वर्चुअल मशीन बा गोटे EC2 इंस्टेंस मते गोटे दरकार तो जेमति कि आमे जानि छी केतरा रीजन अछि 25 regions right all over world तो आमे जानले सपोज इट्स नॉर्दर्न वर्जीनिया suppose Singapore Hong Kong right Australia region हमर रहला suppose Mumbai region right तो ई सब region रहला ईस्ट रे राइट एशिया पैसिफिक रे रहला कोडा तीनटा एटा रहला कोन एशिया पैसिफिक रे रहला तीनटा रीजन ई सब रहला हमर नॉर्थ ईस्ट रे ईस्ट रीजन रे रहला एटा ईस्ट रे रहला राइट तो वर्तमान मु ओडिसा रे अछि
ओडिशा जाउची कोडी एशिया पैसिफिक रे तो मु टार्गेट करबी मशीन कोटो एशिया पैसिफिक रो किछि बट एशिया पैसिफिक रो भी जोटा हमर नियरेस्ट जोटा हमर नियरेस्ट तो हमर नियरेस्ट रोइला कोडा मुंबई लोकेशन right then what I have to do I have to get a machines which is nearest to me that is our Mumbai region right so here I can go and get one EC2 instances so why we should choose the nearest location why should we choose the nearest location exactly to get the lowest latency कम पाई आमे यूज करिबा लोएस्ट नियरेस्ट लोकेशंस त हमर बैंडविड्थ से हिसाब रे कम रहबो तो नेटवर्क लेटेंसी कम रहबो जोटा कि और हाई परफॉर्मेंस रही इजीली आमे सर्वर कनेक्ट कर परिबा सर्वर प्रोसेसिंग से हिसाब रे रहबो राइट तो वी शुड गो टू द लोएस्ट और नियरेस्ट लोकेशन तो जते बळे so it is first thing you have to keep in mind so now let's go and create one machine तो फर्स्ट मशीन क्रिएट करिया वाला फर्स्ट कोन मु चूज करबी हमें EC2 ऊपर पढिले तो EC2 रो को सेक्शन रे EC2 आसीबो कंप्यूट सेक्शन EC2 राइट कंप्यूट सेक्शन रे हमर आसला EC2 okay EC2 then otherwise you can search here also right EC2 search we get this EC2 here got it we got this EC2 now जेमति कि मु कहउतली कोन मु सिंगापुर रीजन रे अछि सी रीजन अछि सिंगापुर नाउ सिंगापुर रीजन है मतलब फर्स्ट लॉग इन कली द डैशबोर्ड आई विल गेट द डैशबोर्ड लाइक दिस इंस्टेंसेस रनिंग 0 एंड ऑल नाउ मते सिंगापुर रीजन रे क्रिएट करिया नै मते को रीजन रे क्रिएट करिया अछि मुंबई देन वी हैव टू चेंज आवर रीजन टू द मुंबई रीजन एशिया पैसिफिक मुंबई ओके एशिया पैसिफिक मुंबई तो मुंबई सिलेक्ट कर दली मुंबई रीजन सिलेक्ट कर नाउ यू कैन सी मो पाकर गोटिए सर्वर जोटा कि रन होउची किंतु सिंगापुर रीजन जे मु चूज करथली सर्वर में देखो नथला जीरो सर्वर थिला बट नाउ आई हैव वन सर्वर राइट सो व्हाट आई कैन डू लेट इट बी द सर्वर नाउ मते कोन करियर अछि मते गोटे इंस्टेंस क्रिएट करियर अछि राइट तो गोटे लॉन्च इंस्टेंस क्रिएट करो तुम क्लिक कले लॉन्च इंस्टेंस तो लॉन्च इंस्टेंस रे मु कोन कली एटू फर्स्ट इंस्टेंस क्रिएट हला परे तो मोटे ना दे देबी इंस्टेंस ना हला तो इंस्टेंस ना दे देलो सपोज डेमो सर्वर राइट just simple na de deli then we can go ahead and select the image amazon linux dele select amazon linux ki okay now each of completely हमें one by one जो बते दोची केमति कोन सब नेक्स्ट स्टेजेस होची नेक्स्ट हमें तो ना गोटे देले गोटे जस्ट गिव ए नेम नेक्स्ट हमर कोन आसुची ना इमेज ता कोन व्हाट इज दिस OS image application and OS image ताकू कोन कहउची ना Amazon machine image AMI that is called Amazon machine image so what is this Amazon machine image AMI तो AMI ता actually कौन हमें नाटा जानले फुल फॉर्म जानले Amazon machine image but what is this actually Amazon machine image is nothing but a template. AMI is a template which contains the software configurations. माने तुमको कौन configurations inbuilt दरकार को ऑपरेटिंग सिस्टम दरकार ता सहित कौन एक्स्ट्रा इनबिल्ट टूल्स थिबा दरकार तमे तो लैपटॉप चूज करछो तुम फर्स्ट कोन देखुछो कॉन्फ़िगरेशंस दे मते एति की RAM दरकार एति की स्टोरेज दरकार एति की प्रोसेसर दरकार एति की मेमोरी दरकार सिलेक्ट कर दलो ताप देखियो कोन मते को टाइप रो ऑपरेटिंग सिस्टम दरकार राइट हार्डवेयर हमें सिलेक्ट कर देले कोटू EC2 इंस्टेंस टाइप को हमें सिलेक्ट कर देले हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस नाउ coming to the software part then we should choose what image type you want to choose
तो मते को टाइप रो ऑपरेटिंग सिस्टम टा दरकार तो मते विंडोज दरकार देन आई हैव टू सिलेक्ट द विंडोज मशीन तो बेसिकली एएमआई कोन एएमआई गोटा होची इज an AMI is a template that contains the software configurations like operating systems application server किछि गोटे apache server हो कि tomcat server किछि already inbuilt थिबो बेसिकली देखियो बोले गोटे inbuilt पैकेज गोटे टेम्पलेट गोटे जो तारे कि तुमर सब जिनस सब बाइनरीज लाइब्रेरीज ऑपरेटिंग सिस्टम एवरीथिंग पैक हेकि गोटे इमेज क्रिएट राइट तो ओके आमे जदि ओल्ड डेज को जिबा right basically if we go to our the very old age right तो सेटिक हमें कौन देखुतले ना ओल्ड डेज रे हमर थिला ना लेट्स imagine machine image okay भाई हमें जो ओल्ड एज को जिबा ओल्ड एज रे कौन थिला ना हमरो गोटे डिस्क रोथला राइट कंपैक्ट डिस्क जोटा कि हमर कहउतले सीडी राइट तो ये जो सीडी टा किंबा डीवीडी राइट सीडी या फिर डीवीडी राइट ये जो सीडी और डीवीडी थिला राइट एतरे कोन होतला ना हमर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम टा हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स टा पूरा राइट करिकरी रखुतले तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम टा हम सीडी प्लेयर पके किंबा लैपटॉप रे पके कि ताको हम इंस्टॉल करूतले तो एटा गोटे कंपैक्ट डिस्क रे हमरो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हेकि थिला हमें नेकि इंस्टॉल करूतले सिस्टम रे तापर वर्तमान आसला कोन हमें कोन करतले ना पेन ड्राइव रे भी वर्तमान यूजुअली हमें पेन ड्राइव रे सही दिन सेटा ओएस टाको आनिकरी जो पैकेज टा कंप्लीटली पैकेज जोटा कि हम सीडी टाइप रखले तापर हमें कोन पेन ड्राइव रे आनिकरी इंस्टॉल कर पाले राइट से जो पर्टिकुलर इमेज टा ताको कोतले आईएसओ फाइल इमेज फाइल राइट आईएसओ फाइल से इमेज फाइल ताको हमें नेकरी पर्टिकुलर इंस्टॉल करूतले लैपटॉप कंप्यूटर इंस्टॉल करते बट से सब वर्तमान आजिकली डेट रे वी आर गेटिंग इट as image format packaged template format in the internet तो इंटरनेट रे कोनोसी जगह रे से माने कोन करछन इमेज गोटे पैकेज बनेगरी टेम्पलेट टा बनेगरी गोटे पैकेज बनेगरी रखुछनी तमे इंटरनेट रु डाउनलोड करिकि तमे इंस्टॉल करबे राइट जेमति कि हमें वर्तमान इमेजिन एएमआई यूज करछे इमेजिन मशीन क्रिएट करछे गोटे वर्चुअल मशीन तो सेटा हमें कोन को चूज करले गोटे एएमआई चूज करे जाउछे एएमआई कोन कहली गोटे टेम्पलेट दिस इज वन ऑफ द template what it contains the operating systems applications what application predefined applications you need सब सॉफ्टवेयर बाइनरीज जहां भी दरकार पूरा पैक है कि गोटे टेम्पलेट एएमआई गोटे तुमको देबे धर मते दरकार गोटे ubuntu machines I want to create one ubuntu machine ubuntu linux machines so what I have to do we have to I can go ahead and choose ubuntu image type so it image type hame jeto dekhile let's see what type of image it provides amazon linux है जो linux ta created by amazon itself then mac os जोटे कि हमरो imac right mac operating systems ubuntu is one of the linux flavored ubuntu windows machine हम सब यूज करछे जानि छे Red Hat is one of the Linux machines. SUSE Linux, another SUSE Linux. Then we have Debian, जोटा कि Ubuntu रो गोटे flavor, Debian flavor. Okay, so ये type रो machines रहउछ. तो हमें जब more image हमें चाहूचे आनिबा पई, then we can go ahead browse more image. Okay, तो हमें एटी search करि परिबो तुमको कोन image दरकार. We can search here. तो हमें तो search करिबा तो एटी three different types रो कैटेगरी आसुछ तुमको बुझे दोची क्विक स्टार्ट एएमआई जोटा कि नॉर्मली इजीली तुम स्टार्ट करे पे एएमआई कैटेगरी रखुची गोटे अछि माई एएमआई यू कैन सी हियर इट माई एएमआई होची जो एएमआई टा कि माई एएमआई इज जोटा व्हिच क्रिएटेड बाय यू माने मोर ए अकाउंट राइट ए अकाउंट मोर दिस अकाउंट इज क्रिएटेड बाय मी ओनली राइट देन व्हाटएवर इमेज टा कोन कहली फर्स्ट गोटे टेम्पलेट ऑपरेटिंग सिस्टम सोची कुछ फाइनल तो मु चाहूची मो हिसाब रे मु निजे इमेज बनै कस्टमाइज्ड जोटा कि कस्टमाइज्ड मते एई ऑपरेटिंग सिस्टम दरकार आ एई
applications already built थिबा दरकार तो मु कोन करी सही सर मो हिसाब रे इमेज बने जो इमेज टा मु बनेली सेटा मो माय इमेज कैटेगरी भितरे रहला तो जतो नेक्स्ट टाइम मते मशीन दरकार मु सही माय इमेज टा को सिलेक्ट करी मशीन क्रिएट नेक्स्ट कम्स AWS मार्केट प्लेस इन माने AWS मार्केट प्लेस रे माने AWS जोटा की क्रिएट करछ AWS मार्केट AWS डेवलपर आ तांका टीम वाला जो माने क्रिएट करछन से सब AMI AWS and trusted third party AMI the other one comes community AMI published by anyone. Community AMI is something which you created and you think like that AMI you can share with anybody. Right? ମୁଁ ଗୋଟେ କଲି ଇମେଜ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ that is community AMI. ତମ କମ୍ୟୁନିଟି ତମେ ଜଏନ କଲ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ସେଇ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ତମେ ସେୟାର କରିଦେବ ତ କମ୍ୟୁନିଟି AMI we are going to use. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଇମେଜ କେମିତି ଚୁଜ କରିବା କେମିତି କ୍ରିଏଟ କରିବା ସପୋଜ ମତେ ଗୋଟେ ubuntu machine ଦରକାର ତମେ କଣ କରିବ ନା ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ubuntu right search ubuntu ubuntu ଟା କଣ Linux machine ଗୋଟେ Linux machine ର flavor ନା ଗୋଟେ right ubuntu Linux machine ତ ମତେ Linux image ଗୋଟେ ସେଭ କରିବାକୁ ଇମେଜ ତ मतलब my AMI ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି ଏଠି କିଛି ପାଇଲେନି right ମତେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ quick start AMI ତ ମୁଁ quick start ରେ AMI ରେ 8 ଟା ଦେଖଉଛି ଆଉ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ ରେ 2602 ଟା ଦେଖଉଛି right କୋନଟା ubuntu right ତ ubuntu ର ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ କଣ ଦେଖଉଛି ଏଇ machine ubuntu machine image right ये इमेज रो कौन कोची फ्री टियर अवेलेबल एलिजिबल माने ए मशीन त हमें फ्री रे यूज करि पारिबा देखो छी आउ नेक्स्ट टा फ्री एटा देखो फ्री नाही इफ यू आर गोइंग टू यूज दिस देन यू हैव टू पे फॉर दैट राइट जो हमें बर्तमान फ्री रे जोटा अछि सेटा देखियो फ्री बट इमेज रो ए इमेज ता कौन कौन डिटेल्स आदरे अछि पर इंफॉर्मेशन देखि छी कौन रहउची Ubuntu server 24.04 LTS. LTS means long term support. Okay, it's called LTS, long term support. What is this long term support? LTS means which is can be available for long-term support. We're going to. How would it be a beta version? LTS version, alpha versions, beta version. So LTS versions which is available for long-term support. Beta versions for R&D for testing they are doing, and the product whatever they have released is under beta version means under testing. Adoption phase testing phase R&D phase right? The long-term. Okay. Next comes Ubuntu amar asla तो एटे कोन अछि LTS 24 point version रो Linux machine AMI ID okay Ubuntu server asila then we have this 22.04 LTS SVM SSD volume type use होछि right Ubuntu type सब select next right the first suppose मते सपोज मते 22 वर्जन दरकार मते तम रिक्वायरमेंट हिसाब तम इमेज चूज करबो मते सपोज 24 दरकार नै मते 22 वर्जन दरकार मते 22 वर्जन LTS दरकार तो मते ई ubuntu सर्वर जनरल पर्पस SSD ए सब दरकार 64 बिट रो तो तम कोन कहले एई इमेज ता चूज करबो सिलेक्ट बटन इमेज सिलेक्ट कर कंफर्म चेंजेस जहाँ भी चेंजेस दरकार सब चेंजेस कंफर्म कलो तो ये डिटेल्स विषय मु परे बुझे देबी आर प्राइस विषय डिटेल्स विषय से सब देई छी हला अब हमें धीरे धीरे डिटेल्स रे सब जानिबा हला कंफर्म चेंजेस चूज कली कौन चूज कली ubuntu इमेज चूज कली राइट नेक्स्ट ubuntu इमेज चेंज हला पर नेक्स्ट हमें कौन चूज कला पर नेक्स्ट आसीबो हमर इंस्टेंस टाइप मु ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर देली मते को ऑपरेटिंग सिस्टम दरकार Linux ऑपरेटिंग सिस्टम दरकार तापर मते दरकार मोर कॉन्फ़िगरेशन कोन मते केते मेमोरी दरकार केते RAM दरकार राइट केते प्रोसेसर दरकार केतेरा CPU दरकार देन यू कैन कम हियर एंड सिलेक्ट सी सब जाक डिटेल्स आइतर अछि तमे जहां भी दरकार तमे सिलेक्ट कर पनी आ सेही हिसाब रे तुमको तार प्राइसेस ता भी तळे लिखिछि जोटा कि हमर 0.085 USD per hour SUSE Linux, right? Red Hat, Windows based price. सबुर डिटेल्स से लिखिछि एति केति प्राइस त हमें कोन करबा ना फ्री टियर देखिबा कोडा दउछि से T2 माइक्रो
जोटा कि T2 माइक्रो जोटा कि फ्री टियर एलिजिबल हमें फ्रीली यूज कर पाइबा राइट सिलेक्ट T2 माइक्रो okay then what we can do go key pair login and all right select the key pair name key pair login तो जो की पैड आमे दरकार को की पेयर हिसाब तमे लॉगिन करिया चाहूछ गोटे की पेयर क्रिएट करबा राइट क्रिएट ए न्यू की पेयर give a name suppose I'll give us demo b12 the key pair ना देली demo b12 तमे भी ना दे दबो की पेयर टाइप this is an encryption method RSA algorithm RSA okay then प्राइवेट की फाइल फॉर्मेट को फॉर्मेट तमे चाहूछ आइदर तमे ओपन एसएसएच यूज करबा चाहूछ कि पुटी यूज करिया पाइ चाहूछ तो पुटी हला ଗୋଟେ थर्ड पार्टी टूल जोटा कि हमें यूज करू पुटी ଗୋଟେ मन रखता पुटी इज ए थर्ड पार्टी टूल what is this putti is a third party tool which is used putti is a third party tool used to connect remote machine used to connect from Windows to Linux remote machine Linux remote machine so what we are going to do we are going to use putti we are going to use putti right so जदि हमें पुटी यूज करिया चाहूचे त डॉट पीपीके और जदि डायरेक्ट गोटे टर्मिनल अछि दर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम तमर अछि मैकबुक रे बाय डिफॉल्ट ओपन एसएसएस दोछि तमे पेम फाइल डाउनलोड कर दो थ्रू पेम फाइल जो सर्वर हमें क्रिएट करबा ता पई गोटे की दरकार राइट हमें गोटे घर नेले ता पे हमें एंट्री करिया पई गोटे की दरकार ना नै घर लॉक थिबो त हमें की दरकार तो अननेसेसरी एक्सेस पई गोटे की जनरेट करबो जो की द्वारा हमें से सर्वर को कनेक्ट करि परिबा राइट तो आइदर तमे हमें कहबो कि पासवर्ड जोटा कि एटा तो पासवर्ड अपन एटा हमर त की हबो जोटा कि पासवर्ड बट एज ए की थ्रू दैट की वी कैन एबल टू कनेक्ट टू द सर्वर जदि तमे कीटा हजल तमे सर्वर को कनेक्ट करि परिबो नाही तो सब बेले मन रख यू शुड save this key safely somewhere so that you can get it easily okay now we can get this .ppk because mate windows machine ru connect kariya achi .ppk create key pair जब create key pair कली ना key pair टा डाउनलोड हे गला देखो .ppk डाउनलोड हे गला राइट को डाउनलोड मोर डाउनलोड फोल्डर रे डाउनलोड हे गला बस जी सी .pp demo b12 गोटे फाइल डाउनलोड हेला राइट सो डन नेटवर्क सेटिंग्स नेटवर्क टा कोन गोटे इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क रो बेसिक्स हमें पढिबा नेक्स्ट हमें तळे मूव करिबा राइट नेटवर्क बेसिक्स सब डिटेल्स रे मु तमु टॉपिक कंप्लीट डिटेल्स रे बेसिक्स नेटवर्क्स विषय बते दिबी हला तो वर्तमान जे तमे गोटे लाइनक्स मशीन क्रिएट करछ नेटवर्क को बाय डिफॉल्ट जहां अछि सेया रख किछि चेंजेस दरकार नै तो बर्तमान कहूँ नेटवर्क जोटा हमें सिलेक्ट करवा एति मन रखता each account they provide one network okay each account they provide one network तो हम जते बले गोटे अकाउंट हमर क्रिएट करबा AWS रे तो से कोन कोन बाय डिफॉल्ट तुमको गोटे नेटवर्क दो सेटा को हमर कहउछंती VPC जति कि जेमति कि हमर आजियो रे कोन VPN यूज करछ कोन एटा यूज करछ एथि सबनेट होला आजियो तमे VPN यूज करछ बा तमर एटा वर्चुअल नेटवर्क VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एटी कोन कोनटा कांसेप्ट जोटा कि तमे आजियो रे यूज करछ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN एटी यूज करछ VPC सेम कांसेप्ट सेम जो सबनेट कहलो सेटा VPN अंडर ही आसुची से सबनेट भी एठी भी यूज हो सबनेट सम एटा हला यूनिवर्सल सबनेट हला ग्लोबल नेम दा का नेम के देना द ग्लोबल नेम VPN हला Azure given VPN VPC given by AWS virtual private cloud एटा हला virtual private network एटा हला virtual private cloud तो
आमे कौन करछना एटा फास्ट बुझो मु जोरे डिटेल्स कहू जदी टेक्निक इम्प्रूव डिटेल्स तुम माने एते इजीली आ एते कंप्लीट डिटेल्स रे कई बुझेबेनी पूरा डिटेल्स पूरा इन डेप्थली मु जाई के तुमको बुझाय चेष्टा करूची तो फर्स्ट कौन करबो ना जेतेबेले गोटे तमे अकाउंट तमरो क्रिएट करिवो when you first create your account right गोटे अकाउंट क्रिएट कलो अकाउंट क्रिएट कलो माने तमरो गोटे बाय डिफॉल्ट गोटे AWS आईडी देबे राइट तो AWS आईडी सहित तमर कोन रहबो गोटे तुमको नेटवर्क क्रिएट कर दे बाय डिफॉल्ट गोटे नेटवर्क देबे से नेटवर्क बेटी कोन कहउछन ना VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड तो एतो वर्चुअल प्राइवेट VPC हला कोन वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड गोटे नेटवर्क क्रिएट कर दो बाय डिफॉल्ट तुम अकाउंट रे गोटे डिफॉल्ट नेटवर्क रहइबो से डिफॉल्ट नेटवर्क रे वर्चुअल क्राइट रहइबो ता दरे तमर रहइबो सबनेट राइट ता सबनेट रहइबो ता दरे तमरो कोन रहइबो सिक्योरिटी डिफॉल्ट सबनेट रहइबो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप रहइबो डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप रहइबो राइट ये सब डिटेल आउरी बहुत सारा इंटरनेट गेटवे रहइबो डिफॉल्ट इंटरनेट गेटवे बहुत सारा डिफॉल्ट थिंग्स रहइबो तो हमें बर्तमान कोन करछ ना जेतोला हमें सिलेक्ट करबा गोटे मशीन क्रिएट करिया पय गोटे मशीन क्रिएट करबा तो हमें जेतोले गोटे EC2 इंस्टेंस गोटे VM नबा तो गोटे VM जेतो हमें गोटे मशीन क्रिएट करबा राइट फर्स्ट हमें कोन देखिया को नेटवर्क रे हमें ताकू रखिबा राइट हमें तो गोटे EC2 इंस्टेंस नौचे क्रिएट करछे हमें चाहबा ताको को नेटवर्क रे रखिबा तो we have to select that particular VPC which VPC we want to keep it okay तो सही टाइप रो हमें एबे बर्तन कोन करिया ना हमें डिफॉल्ट VPC जो डिफॉल्ट ता जो VPC के अकाउंट सहित आसी जो राइट तो मु डिफॉल्ट नेटवर्क डल VPC आईडी अब जरा हम बेसिक विषय रे जानबा बेसिक डेप्थ रे गले तो मु किछ एडिट करूनी बर्तन तापरे सिलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप ता मु तुमको नेक्स्ट क्लास रे बते देबी सिक्योरिटी ग्रुप ता कोन आ कोन पे यूज होय मु सिलेक्ट एक्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप किछि गोटे यूज करूची हला किछि सिक्योरिटी ग्रुप गोटे यूज करूची सपोज okay now let's go not for security group let's go for create a security group okay now मु जाउची गोटे सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करिया पय सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करी तो सिक्योरिटी ग्रुप गोटे कोन is a firewall security group is a firewall जोटा कि तमरो ट्रैफिक कंट्रोल करिया पे माने गोटे सिक्योरिटी प्रोवाइड करिया पे तमे सिक्योरिटी प्रोवाइड करियो तो तमे गोटे वर्चुअल VPC नेलो तार कोन होछ ना तमे गोटे सिक्योरिटी ग्रुप सेटअप करिवो सिक्योरिटी ग्रुप सेट करिवो तो सिक्योरिटी ग्रुप कोन हला सेट ऑफ फायरवॉल rules right set of firewall rules right तो जब firewall rule हमें माने firewall rules कौन सेटअप करिवा को सर्वर कनेक्ट करबो किए कनेक्ट करबो सही टाइप रो रूल्स हमें सेटअप करबे तो मु वर्तमान गोटे सिक्योरिटी ग्रुप रो फर्स्ट कोन करी अलाउ SSH ट्रैफिक माने पर्टिकुलर SSH प्रोटोकॉल द्वारा ही कनेक्ट करियो तो anywhere means anyone can connect to the server from anywhere we can this server can be connected कस्टम आईपी माने केवल पर्टिकुलर मशीन रु तमे चाहौ कनेक्ट करिया पे तमे कस्टम मशीन मिल दबो माई आईपी में केवल मोरी मशीन रु हम कनेक्ट करता राइट तो मु सिलेक्ट करली एनीवेयर डन सिक्योरिटी बुझी पाइलो राइट सिक्योरिटी विषय हमें आहुरी बुझीबा ता जस्ट मु बेसिक बुझे देले आहुरी पूरा क्लास सिक्योरिटी ऊपर कथा हवा तापर स्टोरेज इज स्टोरेज ता तमे केते स्टोरेज तमे नबो राइट बाय डिफॉल्ट फ्री टियर अंडर रे आसुची अप टू 30 gigabyte रो स्टोरेज अंडर फ्री टियर तो फ्री टियर रे कोन आसुची ना अप टू 30 gigabyte रो स्टोरेज अंडर फ्री टियर रे केते आसी अप टू 30 gigabyte रो कोन आसी EBS वॉल्यूम EBS हमें पढ़ी ने नेक्स्ट क्लास में रखी EBS ओके EBS मींस इलास्टिक
Elastic block store. Elastic block store जोटा कि bootable है परिवो. This can be bootable. Bootable means we can install operating systems, we can install applications, right? We can install applications. These are EBS volumes or EBS storage. Elastic block store. आ विषय हमर complete class गोटे अछि हमें नबा but basic अबे बुझे दोछि. So we are going to use EBS volume. So by default EBS volume रे केते दोछि 30 GB आसुछि free tier रे. जदि beyond 30 तमे यूज कलो then you have to pay for that. You have to pay beyond 30 GB. Okay. तो मु डिफॉल्ट सपोज 8 GB रो नै जाइछि. ठीक अछि किछ दरकार नै. नेक्स्ट आसला एडवांस डिटेल्स वर्तमान पई छाड दोछि. नेक्स्ट हमें पढिबा EC2 क्लास ही दुइटा मोर देन 2 वीक्स टाइम नबो केवल EC2 मोर देन 2 वीक्स कारण मशीन्स ता ऊपर ही हम सब किछि पढिबा. आर बहुत सारा फीचर्स अछि, बहुत सारा ऑप्शंस अछि, सब विषय डिस्कशन करे मोर देन 2 वीक्स टाइम. यदि मु इन डेप्थ गली यदि ओवरव्यू कहि दे कि तले पढेली 2-3 दिन सर्जी राइट. पर मु तुमको चाहूछि इन डेप्थली तमे पूरा डिटेल्स रे जानो सो दैट तमरा किछ डाउट ही आसीबनी इन फ्यूचर मो पई इजी हबो केतले मु तापर नेक्स्ट फास्ट मूव करिवि. फर्स्ट बेसिकली तमरा स्ट्रांग बेसिक स्ट्रांग कर दोछि तापर मु फर्स्ट मूव करिवि. हमें तले डेवऑप्स पढिबा. डेवऑप्स रे बहुत सारा यूज हबो मशीन, बहुत मशीन क्रिएट करिया पड़िबो, बहुत डिलीट करिया पड़िबो, यूज करिया राइट. तो वर्तमान आसला समरी मते गोटिए ही इंस्टेंस दरकार है. इमेज सिलेक्ट कर देले राइट. T2 माइक्रो इंस्टेंस टाइप नहीं छे. डन. लॉन्च इंस्टेंस सहीला. तापरे इंस्टेंस हमें लॉन्च कले. We now created the instance. Instance create हो गला. Let's go that. What is say successfully initiated the launch of instance. आ गोटे instance ID create कलो. तो जतले हम गोटे instance create हला गोटे instance ID create हला. See मु गोटे इंस्टेंस क्रिएट कली कोन डेमो सर्वर ता पूर्वरु हमर गोटे डेवलपमेंट सर्वर अछि ऑलरेडी क्रिएट हे करी डेव सर्वर ऑलरेडी आ गोटे इंस्टेंस सी. इंस्टेंस टाइप व्हाट इज सेज इंस्टेंस इज रनिंग. सी इंस्टेंस नेम हला कोन डेमो सर्वर. इंस्टेंस आईडी इंस्टेंस रनिंग. T2 माइक्रो कोन इंस्टेंस टाइप यूज करछि. स्टेटस चेक इनिशियलाइजिंग कंप्लीट हेनी. अवेलेबिलिटी जोन माने को अवेलेबिलिटी जोन रे एटा क्रिएट हेछि राइट. अवेलेबिलिटी जोन एपी साउथ 1A. सो मुंबई रीजन इज हैविंग 3 अवेलेबिलिटी जोन्स. मुंबई रीजन रो 3टा अवेलेबिलिटी जोन अछि राइट. वन रीजन कैन हैव वन और मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन. सो मुंबई रीजन कोड कोन. मुंबई रीजन कोड कोन एपी -साउथ -1. एटाला मुंबई रीजन राइट. तो मुंबई रीजन has 3 availability zone. 3 availability zone. So availability zone first is AP South 1A. AP South 1A. Second is AP South 1B and third one is AP South 1C. तो तीनटा अवेलेबिलिटी जोन अछि. AG1 AG2 AG3. ओके. तो फर्स्ट तो हमें मशीन क्रिएट कले से को अवेलेबिलिटी जोन क्रिएट हेछि 1A रे क्रिएट हेछि. तो हमें एटी स्पेसिफाई करि नथिले जे को अवेलेबिलिटी जोन रे मते दरकार हमें दे देतले बाय डिफॉल्ट जोठी क्रिएट करछि करू. तो हु डिसाइडेड वेयर टू बी क्रिएटेड. के डिसाइड कला. हमें किसी सिलेक्ट कर नथले. वर्तमान के डिसाइड कला कोठी क्रिएट हो. हम पाखरे केतरा अछि 3टा अवेलेबिलिटी जोन अछि. तो इट क्रिएटेड ऑन एपी साउथ 1A. तो के डिसाइड कला. हमें तो डिसाइड करने ना को अवेलेबिलिटी जोन रहइबो. तो के डिसाइड कला. सर्विस प्रोवाइडर. The service provider. Who is the service provider here? AWS. So AWS managed itself where it will be created. Okay, that's the AWS managed service. So
they will, because we have selected anywhere can be, right? We have not selected any specific, automatically created. So okay, तो machine create हो गला. तो first आर बहुत सारा भी details अच्छी information हमें परे बुझिबा. First let me show you how we can connect this machine, how we can connect this machine, right? तो machine केन connect करिबा. First select this. हमें तो details को जिबा. Details रे गोटे अछि IP address. Details रे गोटे अछि public IP. Public IP. So एटी कोन अछि आर कोन प्रोवाइड करछि ना गोटे public IP प्रोवाइड करछि आ गोटे private IP प्रोवाइड. Private IP is static IP. माने जो मशीन टा प्राइवेट मशीन टा रहला तार गोटे हमें जो वर्चुअली क्रिएट करछे, वर्चुअली गोटे मशीन टा फिजिकली तो कोउठी थिबो ना, फिजिकली को गोटे एड्रेस रे थिबो. सो फिजिकली जो एड्रेस रे रहउची सेही एड्रेस रो प्राइवेट एड्रेस ता. और जो पब्लिकली हम जो कनेक्ट करिवा सर्वर को से गोटे दोची पब्लिक आईपी थ्रू व्हिच वी कैन कनेक्ट टू द सर्वर वर्चुअली, राइट? तो हमर पब्लिक आईपी नवा फर्स्ट. Public IP in AWS is dynamic. Remember, public IP in AWS is dynamic. Also, the private IP is static. Private IP will not change. हमें तो restart करियो private IP रहिथिबो, but public IP will dynamically change. Every time you restart, you'll get new IP address, new public IP address. Okay? तो बर्तमान ये IP address हम नवा कॉपी कर देली. तो मते कोन को हमें यूज करथले कोन डाउनलोड करथले .ppk थर्ड पार्टी टूल पुटी यूज करिके. तो पुटी हमें वर्तमान यूज करबा. तो फर्स्ट पुटी टा केमती कोन पाइबा एटी गोटे मु पुटी इंस्टॉल करछि. यू कैन सी दिस इज द पुटी एप्लीकेशन, राइट? दिस इज द पुटी एप्लीकेशंस. वी नीड दिस पुटी टू बी डाउनलोडेड. केमती करबा ना तमे फर्स्ट इंटरनेट को जबो, जस्ट सर्च फॉर download putty, Putty. Okay, so putty, go to putty.org, their official website, putty.org. Okay, so putty.org, then here you can download, click down. So putty duita ways ra asuchi. Gote la माने तमरा इंस्टॉलेबल पैकेज जोटा कि तमे डाउनलोड करी इंस्टॉल कर दबो मशीन रे. आ गोटे आसुची .exe पैकेज जोटा कि तमे डायरेक्ट .exe डाउनलोड कर दबो. आ सेटा तमे कोन करियो मशीन रे रखि दबो. डबल क्लिक करले हमर पुटी एप्लीकेशन ओपन हबो. आ गोटे तमे डायरेक्ट इंस्टॉल कर दबो मशीन रे, राइट? तो तमे एटा फर्स्ट जीवो आ डाउनलोड करिवो तमरा विंडोज मशीन. डाउनलोड परे डाउनलोड सला आ इंस्टॉल सरला परे तमे ए टाइप रो गोटे विंडोज फाइल जोटा थ्रू व्हिच वी कैन कनेक्ट, राइट? तो हमें कौन करियो फर्स्ट सेशन रे एट देखियो तो मुझे दउची कोन होस्ट नेम और आईपी एड्रेस. एटी होस्ट नेम आईपी एड्रेस पुट करियो, राइट? तो होस्ट नेम आईपी एड्रेस पुट पाइबा हमें एटल आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस. कॉपी दिस पब्लिक आईपी एड्रेस. तापर प्रोटोकॉल यूज करबा. हमें तो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करथिले को प्रोटोकॉल टा एक्सेस देथिले पीपीके ता की हमें जनरेट करथिले गोटे प्रोटोकॉल देथिले. गोटे प्रोटोकॉल टा कोन एसएसएच प्रोटोकॉल देत, राइट? प्रोटोकॉल कोन गोटे व्हाट इज प्रोटोकॉल? एग्जैक्टली इज अ सेट ऑफ रूल्स. गोटे रूल किछटा सेट ऑफ नियम, गोटे किछटा पर्टिकुलर नियम को नै गोटे प्रोटोकॉल बनाइ. जेमति हमें जब प्रोटोकॉल फॉलो करन पीएम प्राइम मिनिस्टर हमर गोटे प्रोटोकॉल थिबो. प्राइम मिनिस्टर हैज टू फॉलो दैट. Chief Minister has to follow that protocol. Some minister has to follow some protocols. Similarly, गोटे कंपनी किछि प्रोटोकॉल थिबो, कोनोस इंस्टीट्यूट रे किछि प्रोटोकॉल्स थिबो. तो सेमती गोटे प्रोटोकॉल थ्रू नेटवर्किंग रे प्रोटोकॉल ता माने सेट ऑफ रूल्स, किछि रूल्स आ नियम को हम फॉलो करि के कनेक्ट करबा. तो हमें यूज करबा एसएसएच प्रोटोकॉल. आ एसएसएच रो प्रोटोकॉल रो पोर्ट नंबर गोटे थाए जोटा कि हमर थ्रू दैट पोर्ट वी आर गोइंग टू कनेक्ट, राइट? आमे जो वाईफाई राउटर यूज करछे प्रत्येक राउटर में गोटे पोर्ट थाए, राइट? लैन पोर्ट, वन पोर्ट, राइट? तो लैन पोर्ट रे जोटा कि हम सही पर्टिकुलर पोर्ट रे कनेक्ट कर परिबा. तो एसएसएच प्रोटोकॉल रे डिफॉल्ट पोर्ट हैला 22. मन रखता एसएसएच रे डिफॉल्ट पोर्ट नंबर हैला 22. सो आमे 22 को सिक्योरिटी ग्रुप रे ऑलरेडी व्हाइट लिस्ट करिचे. कनेक्शन रे एसएसएच अछि. SSH सिलेक्ट करिवो. SSH रे ऑथेंटिकेशंस अछि. ऑथ रे तमे सिलेक्ट करबो क्रेडेंशियल.
क्रेडेंशियल रे तमे सिलेक्ट करिवो प्राइवेट की फाइल ऑथेंटिकेशन सुपरटा राइट सिलेक्ट द प्राइवेट की फाइल डाउन गो टू डाउनलोड्स डेमो B12 ओपन डन सिलेक्ट कर दला क्रेडेंशियल कारण यही की द्वारा ही हम कनेक्ट करबी राइट सिलेक्टेड देन मते अपीयरेंस के चेंज कर दवार अछि लेट्स चेंज द अपीयरेंसेस first time it will ask you accept okay. see now let's go give an ubuntu तो ubuntu मु केमिति जानली ubuntu बोली देखो जेतु आमे यूज करछे इमेज कोन ubuntu ubuntu रो ubuntu linux machine रो डिफॉल्ट यूजर आईडी हला ubuntu so different machine रो different user id अछि तो फर्स्ट जेतु मु ubuntu आज सिलेक्ट कली ubuntu देली नेक्स्ट आमे सिखिबा जानिबा जो amazon linux रो डिफॉल्ट यूजर आईडी हला EC2 हाइफन यूजर CentOS रो CentOS Red Hat रो CentOS ubuntu रो ubuntu सी गंगल ना सर्वर को कनेक्ट आइबा तो बर्तन मु लाइनक्स मशीन रे बर्तन मोर विंडोज मशीन रु लाइनक्स मशीन को मु कनेक्ट आइगली तापे मु कोन यूज कली थर्ड पार्टी टूल पुटी तापे मते कोन दरकार पब्लिक आईपी एड्रेस दरकार तारो माने जो सर्वर को मु कनेक्ट करबी राइट नॉर्मली तमे गोटे मशीन को जिबा राइट मशीन कनेक्ट करबो किबा गोटे एड्रेस को जिबो धरो तमर गोटे तुमको गोटे लोकेशन को जिबार अछि हमको गोटे लोकेशन को जिबार अछि राइट तो ई लोकेशन में तुम कोन दरकार ए लोकेशन को तुमरो जिबार अछि आर कोन दरकार एड्रेस तो यू नीड द एड्रेस ऑफ दैट लोकेशन राइट तो एटा जदि हमें गोटे सर्वर को कनेक्ट करिवा तो तार कोन दरकार हमर आईपी एड्रेस राइट तो हमें कोन कले पब्लिक आईपी एड्रेस ता पाई गले पब्लिक आईपी एड्रेस पाई गले तो पब्लिक आईपी एड्रेस ता पाई गला परे काम कोन दरकार एड्रेस तो पाई गले ता भितर को जीवा पय हम कोन दरकार एक्सेस दरकार ता पय हम कोन दरकार गोटे की एक्सेस दरकार ता पय हम दरकार की तो से की ता हम डाउनलोड करथले जोटा की .ppk फाइल रे तो ppk रे फुल फॉर्म कोन पुट्टी प्राइवेट की पुट्टी प्राइवेट key putty private key but so ppk also contains both public and private keys तो हमें गोटे पुट्टी प्राइवेट की जनरेट कले आ गोटे अछि .pem फाइल राइट that pem file also contains both public as well as private both public and private so .pm file ru हमें pem certificate ru हमें both public and private key डाउनलोड करो so ppk फाइल हमें डाउनलोड कले थ्रू ppk we used to connect तो हमें कौन दरकार फर्स्ट गोटे आईपी एड्रेस पाइले देन वी शुड हैव द की टू कनेक्ट द सर्वर तो की जदी पाई गले आईपी एड्रेस पाई गले ता पय हमको एक्सेस दरकार काहा को पोर्ट को वी नीड गोटे पोर्ट एक्सेस दरकार तो पोर्ट एक्सेस हमें कौन कला हमें 22 बाय एसएसएच प्रोटोकॉल को हमें एक्सेस प्रोवाइड दले थ्रू दैट बी कनेक्टेड टू द मशीन राइट तो मशीन कनेक्ट कर से मशीन रे हमें किछि भी जहां दरकार हमें कमांड यूज कर परिबा राइट कमांड जहां भी कमांड चाहे हमें यूज कर परिबा थ्रू प्रिपरेशन